Yeah, Prashant sir, we can start now. Hello and a warm welcome to everyone present here. Today we are assembled here for the webinar on Geospatial Technologies and Water Resource Management by Dr. Arabinda Sharma, organized by Department of Civil in association with Training and Placement. Let me introduce Dr. Arabinda Sharma to everyone. Dr. Arabinda Sharma is currently working as an associate professor and head of department in School of Gangadhar Meher University, Sambalpur. He has obtained PhD in Soil and Water Conservation Engineering from IIT Kharagpur and Masters in Remote Sensing from 𝗵𝘁𝗵𝗏. His illustrious academic career includes throughout first-class distinction. He is the recipient of many scholarships and fellowships, including the National Merit Scholarship 93-95, Gate Fellowship in 2001-3, and Institute Fellowship IIT KGP 2006-9 for pursuing higher studies and research. He has more than 15 years of teaching, research, and administrative experience. His broad research areas include geoinformatics, water resource management, and environmental monitoring and modeling. He has also served as a member of technical program committee of a number of conferences and as a rescue person at various national level workshops. For his excellent academic and professional achievements, his biography has been included in 29th edition of Marquis Who's Who in the World, USA 2011, and 2000 Intellectual. He has also been conferred with several national awards, such as the Jawaharlal Nehru Outstanding Doctoral Thesis Award in 2012 from the Indian Council of Agriculture Research, New Delhi, and the Young Achiever Award in 2013 from the Indian Society of Geomatics, Ahmedabad. Now I want Dr. Arabinda Sharma sir to please start this prestigious lecture for our civil department students. Sir, over to you. Okay. Very good morning to all. And first of all, I would like to thank the training and placement cell as well as the administration of RPS groups of institution for inviting me and giving an opportunity to interact with the students of civil engineering department. So it's a great pleasure for me too, because interacting with students like those who are sitting over here, I am very much confident that this session is going to be very fruitful, not only for those students, but also for me, because I will also get to know something from the students, right? And as told in the title itself, the topic of this webinar is basically the geospatial technology for water resource management. So as such, the title itself describes everything that what is to be there in this webinar. But let me tell you why we are discussing this topic is have a lot of cause and explanation for it. A quite large number of justification is there, because water is something which is vital to us, and managing that water is very difficult task, right? Though it is present abundantly in our earth, in our planet, you might be knowing that at least 3/4 of our planet is covered by water only. Even then, we are facing a lot of problem, sort of a lot of shortage of water, whether it's maybe in terms of quality as well as the quantity. So that is why this topic is going to be very relevant, and as per the time, and as per the basic knowledge that is required by civil engineering students, right? So I'm going to present my
this webinar, I have prepared a small PowerPoint presentations, and I would like to share that slides of those presentation to all of you. So it will be a little bit easy to understand, because sometime what happened, there is a lagging in the voice also. What I am saying to you, it may comes to you little bit later only because of internet connectivity and so on. So if I present and show that slide, then it would be easy for you to grasping the things, right? And if you find the slide is useful to you, you can take a snap of that. As such, if you are interested, then I will definitely share the slide with all of you. That is not a problem. So please let me now allow to show that slide. Okay, I'm going to share my screen itself. Okay. Sir, it will be great if you can put bilingual Hindi-English mix. Right, right, right. So it is visible, na? Slides are visible. PowerPoint slide, Geospatial Technologies is visible because Still, I think it's not visible, sir. Yeah, now perfect, sir. it is okay, na? Yeah. Okay, thank you. Um, so as I was telling you that why we are discussing this topic. So though this topic is relevant relevant for the entire world or globe, but we will little bit discuss with respect to our nation, India itself. So if you see, India is having only 2% of the world's land surface and only 4% of the total fresh water available on this planet. And but at the same time, what is happening? We are having a population which is constituting the 16% of the world populations, and at the same time, we are having 10% of its cattle. Means we are having a large population of both animal as well as human beings. So with such a large populations, but with very small amount of resource, like 2% of land and 4% of fresh water. So from this simple statistic itself, you can able to realize that what is the pressure on these resources, है ना? तो इसी से मालूम पड़ हो सकता है कि देखिए, हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेस हैं। 2% लैंड सरफेस है, 4% वाटर है अपने पास, लेकिन ये 2 और 4% जो रिसोर्स है, पे कौन लोग डिपेंड कर रहे हैं? अराउंड 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन and 10% of the cattle of the world. So this statistics itself is showing the significance of water resource management, right? और यदि देखा जाए तो geographically India covers about 329 million hectares of land, right? And out of which say 23% is forested, 7% is of say kind of wasteland and so on, non-agricultural land, sorry, and 23% is around say wasteland, and only 47% is usable for agricultural purpose. Means जो कृषि उपयोगी जो जमीन है वो मात्र 47% है, right? Why I am talking about agriculture here is that agriculture sector is also a very important one, which requiring huge amount of water for irrigation purpose, right? And providing food to a population of say 140 billion people say is very difficult task, right? Sorry, 1.4 billion people is very difficult task. And if you find out the statistics, because our population is increasing day by day, and now we are the largest populous country in the world. We have already surpassed China. So if you see 50 years ago, we have a per capita land availability of around 0.9 hectares, right? But if you see, if the population of India grows in the similar pace or with similar rate, then what will happen by 2050 is that our per capita land availability will be simply 0.14 hectare. So there is a substantial pressure on the land resource on. Okay, why I'm saying that land resource means it will put impact on our available arable land or agriculture land. जो भी जमीन कृषि उपयोगी है उन पर इसका प्रेशर आएगा, क्योंकि वो जमीन को अपन कन्वर्ट करेंगे फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? तो
And if you see, talk about say, out of that 47% of agricultural land, only 37% of that land is irrigated. 37%. Remaining 63% is rain-fed agriculture. Okay, means if we want to feed our population, okay, our increasing population, then we have to go for multiple cropping system and so on. And for that, what is required is irrigation facility. So we have to develop more irrigation facility and so on. And irrigation is only be successful when we have available water. If there is no water, creating irrigation structure will not be of any use, right? And as we all agree that our population is increasing steadily, and it is one of the fastest growing nation in terms of economy as well in terms of population and so on. So the pressure on both land and water is inevitable. We have to face or with the consequences of this rising economy as well as the rising populations, right? And if we have to feed our population uh, in the year suppose 2050 and so on, then what we have to do is that uh, we have to make our 50% of arable land irrigation. Okay, but if it is not, then it will be a kind of problem for us, because if we will not provide irrigation facility, then we will not able to produce the sufficient amount of food grains to feed our population. And by 2050 we have to increase our irrigated amount of irrigation land by at least 50%. Currently it is 37%, so we have to increase by 13%. Excuse me. हाँ सर, मतलब बीजे okay, sorry. So and if you talk about the availability of water and so on, you see, though we are having a very good amount of water resource as such, we have a very huge amount of water resource available both in the form of surface water, in the form of groundwater, and India also receive a very good amount of annual rainfall also, right? But what is happening is that to I mean, maintain our growth, both in terms of say economic growth and to meet out the requirement of our population, we will be needing extra amount of water, right? Extra amount of water. So what is that say heading over which we will be needing that water? So सबसे पहला इसमें है to grow food, जो हमको irrigation facility provide करनी है by 2050, that will be needing a very huge amount of water for irrigation purpose, right? And that amount of water is around 628 to say 807 billion cubic meter. So by 2050, our irrigation water requirement will be increased to somewhere 628 to 807 billion cubic meter, right? Similarly, since the population is increasing, life standard is also increasing. So for that purpose too, क्योंकि अपना lifestyle जो है वो भी काफी improve हो रहा है. पहले जैसे अपने लोग घर में शावर वगैरह नहीं लगाते थे, सिंपल नल से या कहीं कुएं से पानी लेके भी अपना जो डेली वर्क कंप्लीट कर लिया करते थे. बट नाउ द अवेलेबिलिटी एंड इजी अवेलेबल ऑफ वाटर, सब गवर्नमेंट ने क्या किया कि घर से घर घर में पानी सुविधाएं पहुंचा दी. तो उससे एक चीज अच्छी चीज है, बट एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जो वाटर कॉन्शियसनेस होता है लोगों के दिमाग में, वो कहीं ना कहीं कम है. क्यों? पहले लोग मेहनत करके कहीं से पानी लाया करते थे, अब पानी उनके घर में आसानी से पहुंच रहा है. तो दे ग्रेजुअली I mean, forget the importance of the proper use of water. And with the advancement of say lifestyle and so on, the water requirement is also increasing. Suppose मैं पहले मेरे घर में बाथटब नहीं लगाता था, अब बाथटब यूज कर रहा हूँ. So that requires more amount of water. मेरे को नहाने के लिए एक बाल्टी पानी जरूरत थी, 15 से 20 लीटर पानी से मेरा काम चल सकता था, बट मेरे को अब टब में नहाने की आदत होगी सपोज. So what is it? I will be needing around 150 to 200 liters of water minimum. That. So likewise, because of that growing economy as well as lifestyles, our water requirement is also increasing.
एंड करंटली एक स्टैंडर्ड है कि जो गांव में रहते हैं उनके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए पर कैपिटा और वाटर रिक्वायरमेंट इज सपोज 150 लीटर, 150 लीटर यदि पानी मिलता है तो एक आदमी के लिए सफिशियंट है गांव में। और शहरों में इसी का है 220 लीटर। ये गवर्नमेंट एक स्टैटिस्टिक्स है कि भाई ठीक है, इतना पानी यदि किसी को अवेलेबल है तो वो अपना दिनचर्या आराम से कर सकता है, उसको वाटर की कोई दिक्कत नहीं अपने मान सकते हैं। बट जैसे मैंने अभी अभी कहा कि लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि 150 लीटर गांव में सफिशियंट एक इंसान के लिए, उसी तरह 220 लीटर पानी शहर में किसी भी इंसान के लिए सफिशियंट है। बट क्या आपने इतना ही यूज करते हैं? आपने जब देखेंगे, इफ यू विल इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, वी विल रियलाइज दैट वी आर यूजिंग मच मोर देन द व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रेस्क्रिप्शन फॉर वाटर यूज फॉर इंडिविजुअल पर्सन। सो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर के ऊपर में और ज्यादा प्रेशर आएगा। एंड यू मस्ट बी रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग इन बैंगलोर राइट नाउ। बैंगलोर क्या होता था, एक सपोज टू बी कंसिडर्ड टू वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, or say having a very you can say pleasant climate and so on. But what is happening this year or in the recent time, that they are facing a water scarcity since the commencement of this March month only. मार्च के शुरुआत से ही वहाँ पानी की कमी हो चुकी है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज बैंगलोर को एक बहुत ही प्लीजेंट क्लाइमेट माना जाता था। बाकी शहरों के मुकाबले बैंगलोर का जो क्लाइमेट था उसको अच्छा माना जाता था, वहाँ ज्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, बारिश अच्छी हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ है, लास्ट 20-30 सालों में बैंगलोर हैज ग्रोन ऑफ लाइक एनीथिंग। द पॉपुलेशन ऑफ द बैंगलोर हैज राइज टू आई मीन वेरी, इट हैज रेदर सरपास द चेन्नई इटसेल्फ। जो चार बड़े महानगर होते थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास अपने कहा करते थे, बट रिसेंट टाइम में बैंगलोर ने क्या किया है, चेन्नई को सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सो ऑन। क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंपनियां, यू नो दैट इट इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आल्सो। तो ये ग्रोथ तो हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ है, ये सब साइड इफेक्ट हुआ है कि वाटर रिक्वायरमेंट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उसको अब सफिशिएंट वाटर वहाँ पे, जो भी वहाँ की वाटर रिसोर्सेस थे, जो वाटर बॉडीज थी, वो दे आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वाटर टू द रेसिडेंट ऑफ बैंगलोर। सो दैट इज हैपनिंग। और इसी तरह जो बढ़ते जाएगा वाटर रिक्वायरमेंट, तो बाय 2050 आवर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर providing the population of India would be around 90 to 110 billion cubic meter। ये इतना वाटर जरूरत होगा। फिर अपने क्या करते हैं, we have constructed large number of hydroelectric project also। हमने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रखा है। उनका क्या होगा यदि पानी नहीं होगा तो मान लीजिए बारिश हो रही, बारिश फिक्स है, जो भी बारिश होगी, सपोज 110 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया सपोज, तो बारिश तो उतनी ही होगी। उस बारिश का पानी जो होगा उसके लिए अपने को इरिगेशन में प्रोवाइड करवाना है, अपने को जो पॉपुलेशन है उनका जो दिनचर्या है उसके लिए पानी, डेली रिक्वायरमेंट उसके लिए पानी सप्लाई करवाना है। तो इतना पानी यदि देंगे तो क्या डैम का रिजर्वर में सफिशिएंट वाटर रहेगा? if the dam will have a sufficient water head to produce the required amount of electricity? That's the biggest problem. If you want to operate all those dams in its capacity, we need a water requirement of around 63 to 70 billion cubic meter again। वरना वो डैम सब फेल हो जाएगा। जो हजारों करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट कर रखा है उस डैम में, वो खत्म हो जाएगा, उसका पर्पज फेल हो जाएगा। It will not able to generate that required amount of electricity। Similarly, industrial use, we need industrial growth because they are the kind of economic engine to the growth of our country as well as bringing out the prosperity among the people. We cannot deny the growth of industry also, and many of the core sector industries, suppose mining industries are there, food processing industries are there, right? Food processing industries are there, right? Or suppose metal industries are there, they are require, I mean power plant, thermal power plant, they are all requiring huge amount of water again, right? And that water requirement would be again around 81 to 103 billion cubic meter, right? Similarly, we have internal waterways is also there. Navigation purpose, we are having inland waterways through which we are, I mean commuting, we are transporting our goods also, right? For that, the river must have to be some least a minimum amount of water flow in it. The discharge in the river must be to a minimum critical level, and to maintain that minimum critical level so that we can able to facilitate navigation activity in our river like Ganges and Brahmaputra,
then we have to again allow the sufficient discharge within that river, and for that purpose the water requirement would be again 15 billion cubic meter, right? And it is a requirement, but you know there's a natural loss of water also through evapotranspiration and so on. Okay, groundwater seepage is also there, but even if we consider only the loss of water through evapotranspiration only, that is amounting to around 76 billion cubic meter. And as you know, because of climate change, what is happening, our average earth temperature is gradually increasing, and if so happen तो क्या होगा, तो evapotranspiration का जो लॉस है वो भी ज्यादा ही होगा, बढ़ते ही जाएगा, राइट? उसके बाद हमने क्या, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी टू मेंटेन सीरीन वाटर इकोसिस्टम हमने पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पॉन्ड है या फ्लोइंग वाटर बॉडीज है लाइक रिवर, वहाँ का इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी वहाँ पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होगी. सो दैट विल बी अराउंड 20 billion cubic meter. So if we sum up all those water requirement, then it will be somewhere between 970 to 1200 billion cubic meter, right? इतना वाटर का रिक्वायरमेंट अपने को है, 970 से लेके 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर का वाटर रिक्वायरमेंट है. और अपने पास वाटर कितना है, बिकॉज थ्रू वी आर गेटिंग दैट वाटर थ्रू annual rainfall only, and that annual rainfall with अपने जो भी 110 centimeter multiplied by the geographical area of India, suppose, and whatever water storage is there in the form of reservoir and so on, or underground water maybe, all those comes around suppose 1100 to 1400 billion cubic meter. So my point of saying is that if you see this table, the table को देखने से इतना अंदाजा हो रहा है अपने को कि जो जितना पानी अपने को मिल रहा है या अवेलेबल है इंडिया में, उतना पानी का रिक्वायरमेंट एकदम बैलेंस हो जा रहा है. मींस वी आर हैविंग नो सरप्लस वाटर. तो एक साल यदि सूखा पड़ता है, जो 110 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल भारत में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, यदि किसी वजह से नहीं होता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट एंड सो ऑन, तब क्या होगा, बारिश कम होगी तो ये वाटर का रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगा? सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो हाउ टू मैनेज सच सिचुएशन. जैसे मैंने अभी कहा कि भाई बेंगलोर में मार्च की शुरुआत से ही पानी की कमी महसूस होने लग गई है. देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. यू जस्ट मेक ए गूगल सर्च and you will get to know what is the severity of water shortage in Bangalore itself, right? So this is happening. This is the situation. So in that situations, if we will not adopt anything to manage our available water resource, or if we will not adopt anything to develop more amount of water, then definitely we will be in trouble in coming years. So that is why this particular topic, managing the water resource, is important to us. Okay, so why it is happening? Because with water resource there are certain problems are there. When we say water shortage, this may be of two type, in terms of quality or quantity. Quality का मतलब क्या, पानी तो available है, we are having enough water. If we dig our surface by say 10 meter and so on, we will get enough of water. But the problem is that water is not qualitatively good. Means we cannot consume that water because of say soil salinity, or because of say some kind of groundwater contaminations, or because of seawater intrusion like that. And this is happening throughout the coastal area of India. If you remember, just 3-4 years back, during the Corona time itself, the Chennai city is facing a lot of shortage of water. Chennai is a coastal city as such. You just imagine. So it is a little bit presumption. We can make a presumption that being a coastal city, it must have a very good water availability there. But it is not like that. Water is there. Okay, if you will dig a borewell in that region, you will get the water. But problem is that because of seawater intrusion, the groundwater is saline in nature. So it is very difficult to use that groundwater, right? Water availability is there, but problem is that it cannot be usable, at least not potable purpose. We cannot use it for any domestic activity, or suppose even if you will use for industrial activity, you know, if you will use salty water, what will happen to your machines and different equipments.
your boiler and so on, it will get damaged soon. So that will not be economical for running that kind of industrial process using such kind of saline water. So because of that problem, uh, the Chennai has had faced a lot of water issue, and the different states has to send water tanker through railway to meet out the requirement of Chennai city. So this is happening. I mean, every now and then you will get to know about this kind of issues in one or another city of India also, and it is happening because of what? Degradation and depletion of resources. Degradation means the water is there, but its quality is degraded to such an extent that it is no more usable to us. हम पानी है but यूज करने लायक नहीं है, तो ऐसा पानी का कोई फायदा नहीं है, राइट ना अपन उसको खेती में यूज कर सकते हैं, ना घर में जो अपना हाउस होल्ड एक्टिविटी है उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो वाटर रह के भी कोई फायदा नहीं है। और अदरवाइज डिप्लेशन कि समझ लीजिए ग्राउंड वाटर है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई कि भाई ठीक है, जो लोग भी बोरवेल वगैरह अपने खेतों में लगाएंगे उनको सब्सिडी दिया जाएगा, दे शुड मेक यूज ऑफ ground water to irrigate their agriculture field and so as to produce more amount of food through double cropping or system and so on. It is fine. It at very short instance, in a very short period of time, it will look very nice. But if you see the whole things at a time period of say 10 or 20 years, decadal scale, then you will able to realize how fast our groundwater is depleting. ट्यूबवेल फेल हो जाना, ट्यूबवेल था आज से 5 साल पहले अच्छा पानी दे रहा था, अचानक से पानी कम देना शुरू किया और अचानक से टोटली फेल हो गया, बट इट इज नॉट नो मोर प्रोड्यूसिंग वाटर एट ऑल. इट इज हैपनिंग इन एवरी नाउ एंड देन you can able to see in your own locality also. जो भी आपका जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे वाटर जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो फास्ट डिप्लीटिंग हो रहा है, बिकॉज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट excessive use of that groundwater for irrigation and so on. तो क्या सही है क्या गलत ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, it's a policy matter of policy, but thing is that if we will not address a particular problem well in advance, then the time will be more difficult for us. Coming time will be more difficult for us. So that is why we have to look into it, how to make a judicious use of available water resource. That has to be planned properly. ठीक है, सभी लोग साथ में बैठ सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स हो, जो वाटर एक्सपर्ट हैं, वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट है, फार्मर्स हैं, जो भी हैं, सब साथ बैठ के ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन ला सकते हैं जिससे सबका काम चल जाए और जो अपनी जो बर्डन है अपने वाटर रिसोर्स पे वो भी उतना ना आए. Second, जैसे deforestation, desertification, it is also very common, right? Because that Mahendragarh district is also at the fringe of that third desert, right? It's a kind of semi-desert area. So you must be realizing how the desert is expanding itself year after year. It is expanding. Deforestation, cutting down of the trees and forest, and because of that groundwater table is decreasing. And the quality of water is also deteriorating day by day. Loss of productive soil erosion, because the topsoil is the most important layer in our Earth's crust. It not only in terms of productivity, but also it acts as a storage house for moisture and water also. A good amount of water is being stored in the topsoils. Okay, well, because if you further move down, we will have what? Rocks only. So rock cannot store. Okay, rock can store in some geological formation in the form of aquifer, but that cannot be used directly by any plant or vegetation. It is a topsoil which can store huge amount of water, which can be used by plants, vegetations, or agricultural crops for their growth and so on. Right. So soil loss through erosion is also a biggest problem, because it is removing out the what is called the topsoil, which is responsible for storing the water in terms of soil moisture and so on, right? Then carrying capacity of the streams, we are also manipulating the discharge of our river, we are manipulating the course of our river through different activity, right? Through some kind of development, we are enforcing the floodplain area of any river or streams. We are dumping waste material, solid waste material along the bank of river and so on. Encroachment of river land is also not a uncommon in India, because we are enforcing a lot of land of river also.
we are developing some kind of either we are performing agricultural activity over there, we are developing some kind of houses, buildings, and so on. So because of that encroachment of the land, which is supposed to be a part of your river system, is also creating a problem in water resource management, right? Besides that, natural disasters like drought, floods, these are also very common. So drought and floods are basically through rainfall only. If there is no rainfall, we will face drought kind of situation. If there's an excess rainfall, we will face the flood kind of situation. And unfortunately, we are facing the same type of problem in different parts of the India in the same season also. Suppose if you say 2023 monsoon season, some of the states are facing with devastating floods, or some other states are facing with acute shortage of water, and a drought kind of situation is there. There are certain states like suppose UP, Bihar, or Assam. They will face flood-like situation every year. But at the same time, you will see Vidarbha region of Maharashtra, or say the Telangana region is very likely to face such a drought-like situation. Very common over there. So in the same season itself, of the same year only, the different part of our country is facing the same problem. So can we do something to avoid such kind of problem? Can we avoid flood in some parts of the India, or can we able to avoid drought-like situation in other part of India? Okay, one basically scheme that say not scheme, that is ambitious kind of ambitious project of government of India, which was though conceptualized during the 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗏 government, that we will join the different river streams, or linkage of intervention. Okay, linkage. So we will join the different river system of our India. But because of some regions, like mostly by the environmental list protest, that could not be floated subsequently, but it has been conceptualized and still in the mind of the policy making people, that can we able to join our different river systems, so that we can able to transfer water intervention, or transfer of water can be materialized, right? If it is happening, then obviously these situations of flood and drought like situation can be avoided to great extent. But of course, before proceeding for such kind of project, we must have to give due consideration to all environmental consequences, right? Because we cannot ignore those things, because whatever project we will implement, that should be sustainably, that should be viable for a long period of time. It is not like that it is building good results, अच्छा रिजल्ट दे रहा है कुछ सालों के लिए, 5 साल 6 साल 10 साल अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं, आप अभी हरियाणा में ही देख लीजिए, हरियाणा का जो भी, Haryana is also a kind of semi-desert area, right? It's getting arid area, not getting enough rainfall, but having very good, say, irrigation infrastructures. Irrigation facility काफी अच्छे हैं as compared to some other states. If you see, Haryana has a very good irrigation facility. But ये अच्छी बात है, and Haryana has also played a very great role in, say, green revolution in India. But subsequently क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? Suppose Karnal region है, Karnal region is facing a lot of problem related to soil salinity and water logging problem. जमीनें ऐसी हो गई है कि वहाँ पे खेती करना मुश्किल हो रहा है। Soil इतनी saline हो चुकी है, नमक का हिस्सा इतना बढ़ चुका है कि वहाँ खेती करना क्यों हुआ? Ground water, वो इरिगेशन की वजह से, एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से वहाँ का जो पानी का में नमक की मात्रा ज्यादा हो रही है, ग्राउंड वाटर काफी ऊपर आ गया है। So they are facing water logging and soil salinity problem. तो जिस पर्पज के लिए हमने वो सिस्टम को डेवलप किया था कि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके, ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ, वो चीज हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और वहाँ के जो किसान है, हो सकता है उनके भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई हो, लेकिन सिचुएशन अब ऐसा है कि कुछ पार्ट में एटलीस्ट वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, सॉइल सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, जिससे वही फार्मर आज परेशान है कि भाई खेती कैसे करे वहाँ पे। So such thing is happening. So that is why if we are implementing some project, so we have to think of for this long-term output, not for short-term gain, right?
कि and for that we must have to give due consideration to its environmental consequences, right? बट इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली अपने को जो भी वाटर और फूड या लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वी हैव टू मैनेज इट वेरी जुडिशियसली और साइंटिफिकली। जो भी अपने करेंगे वो कोई एक सिंगल दैट शुड नॉट बी एम्पेरिकल वन कि मैंने एक मेथड अप्लाई किया और उससे कुछ अच्छा पैदावार हो गया या कुछ भी, तो दैट शुड नॉट मीन दैट दैट मेथड इज एक्यूरेट एनफ और गुड एनफ साइंटिफिकली, राइट? हो सकता है वो किस वजह से हुआ हो, जैसे आजकल देखते हैं कि फ्रूट्स वगैरह में जो सम काइंड ऑफ chemicals has to be injected so as to increase its color or its size and so on. It is happening. इसका benefit ये है कि those products are available in the market in sufficient quantity. आदमी को कमी नहीं महसूस हो रही है, but at the same time what is happening because of application of that kind of chemicals we are facing the problems like health issue. Suppose एक टाइम था जब ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ, पंजाब और हरियाणा का रोल काफी बड़ा रोल था इसमें और वो काफी पैदावार को इंक्रीज करने में सफल भी हुए वो लोग। भारत को एक फूड ग्रेन के टर्म में से सेल्फ सफिशिएंट बनाने में सक्सेस भी हुए। बट क्या हुआ, they when they started using that chemicals and so on to I mean grow their cereal crops and so on against the say effect of say some kind of insect and so on, जो insect पेस्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके अगेंस्ट में बढ़ाने की कोशिश की। they have used so much of insecticide pesticides but ultimately what happened, the cancer kind of situation has arisen in large number over there। आपका जो हरियाणा रहा, पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, सपोज सिरसा है या हिसार एरिया है, वहाँ पे भी कैंसर काफी कॉमन हो गया है। हर घर में कैंसर का इश्यूज, यू विल बेटर नो बेटर देन मी, सो यू नो दैट, सो दैट इज हैपनिंग। सो कोई भी चीज यदि अच्छा रिजल्ट दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा हमें को ध्यान में रखना है एंड देन ओनली वी विल एबल टू implement that project in a successful way. Otherwise, okay, for a short time it will give you a very good result, it will yield a very good result, but in long run it will be devastating in nature। okay, तो जो भी वाटर रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स है अपनी, तो कहाँ से वो एक्सेस, जैसे हमने एक स्लाइड में देखा था कि जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है और जो भी वाटर रिसोर्स अवेलेबल, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर ऑलमोस्ट। तो फ्यूचर में जो भी अपना वाटर रिक्वायरमेंट, सपोज अपना पॉपुलेशन आज 140 करोड़ है, कल को बढ़ के 160 करोड़ होता है, तो वो 20 करोड़ के लिए एक्स्ट्रा वाटर पानी कहाँ से लाएंगे? ठीक है, वाटर तो उतना ही होगा, हो सकता है पानी कम ही हो जाए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर का जो रिसोर्सेस है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन, डिक्रीजिंग रेनफॉल, अपना वाटर रिसोर्स कभी बढ़ने नहीं जा रहा है, ये घटेगा ही, क्योंकि वी आर रिसाइडिंग इन ए ट्रॉपिकल रीजन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर रिसाइडिंग इन ट्रॉपिकल रीजन, एक वार्म क्लाइमेट में रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि पानी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है और पहले से ही अपन एक वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, तो यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज ही होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा और इसका नेगेटिव इफेक्ट वाटर रिसोर्स पे आना ही है। हाँ, अपने यदि रशिया में होते, रशिया का साइबेरिया जैसा एरिया है, वहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से फायदे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लैंड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, एंड मेजॉरिटी पार्ट ऑफ साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया इज नॉट एरेबल, वहाँ खेती नहीं हो सकती है। रीजन इज सॉइल इज इन परमाफ्रॉस्ट कंडीशन, वहाँ सॉइल में ही बर्फ जम के रहती है, सॉइल के अंदर ही, तो पानी यूज, बर्फ किसी यूज का नहीं है, वहाँ खेती नहीं हो सकती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, दोज लैंड इज नॉट एरेबल राइट नाउ, दैट विल बी सब्सिक्वेंटली एरेबल। वो जो जहाँ पे खेती नहीं कर पा रहा है रसिया, यदि क्लाइमेट चेंज होता है तो रसिया उस जमीन में भी खेती कर पाएगा, गेहूं वगैरह पैदावार कर पाएगा, तो रशिया ऐसे कंट्री के लिए फायदेमंद है क्लाइमेट चेंज। बट जैसे इंडिया है, इंडिया एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है, वार्म क्लाइमेट में है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। माइनर चेंज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ विल गोइंग टू अफेक्ट a lot in countries which are lying in the tropical climate, warm climate, right? So उस हिसाब से अपने यहाँ प्रॉब्लम ही होगा। तो उस सिचुएशन में अपने को जो अपना वाटर रिक्वायरमेंट है कैसे मीट आउट करना है, हाउ विल वी मीट आउट आवर वाटर रिक्वायरमेंट? नया डैम बनाना है अपने को, न्यू डैम,
न्यू डैम का पर्पज ये नहीं है कि अपन एक रिजर्वर खाली बना रहे हैं and to meet out the irrigation requirement of the locality or to generate electricity. No, उसका पर्पज ही अपनी ये कर रहे हैं कि सपोज इंटरवेसिंग ट्रांसफर, कि एक नदी का पानी हम दूसरी नदी में ट्रांसफर कर रहे हैं. फॉर दैट आल्सो वी नीड डैम लाइन स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव टू स्टोर दैट वाटर एंड दैट एक्सेस वाटर को अपने को क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफर टू सम अदर. ओके, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी हर्डल्स है, साइंटिफिक हो या एनवायरमेंटल हो, दैट वी हैव टू क्लियर फर्स्ट. Okay, conceptually it looks very nice that interbasin transfer of water is very good schemes, but we have to look for the other consequences in terms of technical consequences, economic consequences, and of course the environmental consequences. Second thing is the groundwater development. You see, we have been using groundwater consistently. अपने खाली use करना है, but वो groundwater आएगा कहाँ से? That must be recharged. तो उस वाटर को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट? जो अपने जहाँ पे भी रिचार्ज जोन था, वो रिचार्ज जोन को, जैसे कि मैं कहा कि फ्लड प्लेन एरिया, सपोज फ्लड प्लेन एरिया जो कि नदी के किनारे किनारे जो जगह होता है जहाँ पे एक्सेस वाटर स्टोर होकर रहता है, वो दैट गेट इनफिल्ट्रेटेड एंड पर्कुलेट डाउनवर्ड टू रिचार्ज आवर एक्विफर. उस फ्लड प्लेन एरिया में अपने क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली फिर रिचार्ज होगा कहाँ से? ग्राउंड वाटर कहाँ से रिचार्ज होगा? तो ठीक है, कंसेप्ट वाइज देयर वी हैव वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वी हैव टू क्रिएट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए. ठीक है, अपने रूट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग हो या वाटरशेड लेवल में कोई ऐसा छोटा सा चेक डैम वगैरह बना के अपन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं. दैट विल फैसिलिटेट मल्टीपल पर्पज, दैट विल अलाउ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकेलिटी एज वेल एज अलाउ द सीपेज ऑफ वाटर टू रिचार्ज आवर ग्राउंड वाटर. सो वो चीज कर सकते हैं. ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए अपने को काफी इनिशिएटिव, ठीक है, कई से जगह यहाँ पे कंपलसरी हो रखा है कि यू कैन नॉट, ठीक है, बोरवेल, कई स्टेट्स हैं जहाँ पे आप बोरवेल बिना गवर्नमेंट परमिशन से नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोग जहाँ अभी हैं उड़ीसा में, संबलपुर में, यहाँ ऐसा कोई रूल्स नहीं है. people can anytime call the borewell machine and dig a tube well. There is no constant is there is no requirement of any permission and so on, right? So ऐसा तो अपने को एक प्लानिंग करना होगा कि हाउ टू यूज. सपोज इंडस्ट्रियल वाटर है, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल हैव टू पे फॉर दैट वाटर. सपोज इंडस्ट्री को वाटर का रिक्वायरमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, दैट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. पावर प्लांट है, coal based fire power plant, any kind of power plant, it requires huge amount of water, but they have to pay for it. खाली पे करने से नहीं होगा कि मेरे पास पैसे में पे कर दिया होगा. नो, यू हैव टू again recycle, reuse the existing your water usage. जो भी water आप draw कर रहे हो river से, reservoir से, that water must be recycled also. Such kind of policy has to be brought. Then only we can able to minimize the effect on our water resource, right? Then demand management है, of course सबका डिमांड है. हम बोलेंगे, हम लोग सर्विस मैन है तो हम बोलेंगे भैया हम हमारे घर में पानी अच्छे से मिल जाए, जैसे हमने अपने जो डेली एक्टिविटीज है, रूटीन एक्टिविटी हम आराम से कर लें, कपड़े धो लें, नहा ले, खाना वाना बना ले. हमको वाटर, फार्मर को पानी मिले ना मिले हमें कोई मतलब नहीं है. हमको जो फार्मर होगा वो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो पानी की जरूरत है, उसको जरूरत है, भले इंडस्ट्री को मिले ना मिले, मेरे को पहला मिलना चाहिए. इंडस्ट्री बोलेगा कि मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट करो, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ, पावर प्लांट तो बंद हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा. तो सबका अपना रिक्वायरमेंट होगा, सबका अपना एक जस्टिफिकेशन होगा कि मुझे पानी मिलना चाहिए. तो उस केस में डिमांड का जो मैनेजमेंट होगा वो उसके लिए एक ऑप्टिमल पॉलिसी के साथ एक मॉनिटरिंग के थ्रू अपने उसको मैनेज करना के कोई सिस्टम होना चाहिए, किसको कितना पानी मिलना चाहिए, किसका कितना पानी का रिक्वायरमेंट है. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी मैटर करता है कि सपोज ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज करें जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ही कम होगा, दैट इट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. वी शुड डेवलप फार्मिंग टेक्नोलॉजी. सपोज ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा. उसी तरह यदि अपने को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करके सेम वी हैव टू डेवलप द सेम प्रोडक्ट, बट दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट विल रिक्वायर सपोज less amount of water. We have to modify the manufacturing process in that industrial facility so that it can have a minimum impact on a water resource. और ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे एक टर्म कार्बन फुटप्रिंट, कि हम जितने भी
रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं या जो भी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली जनरेटिंग सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी डेली एक्टिविटी की वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अपने जनरेट कर रहे हैं, सपोज अभी अपने वेबिनार कर रहे हैं, ये वेबिनार के दौरान भी बहुत सारी, इसका भी एक कार्बन फुटप्रिंट है। क्यों? एक सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, आप लोग बैठे हो वहां पे फैन एसी चल रहा है। तो ये यदि वो हॉल में यदि ये वेबिनार नहीं होता तो वो एसी नहीं चलता, लेकिन अभी मान लीजिए एसी चल रहा है, तो वो कॉस्ट कहाँ आया? ये वेबिनार के ऊपर आया कि भाई ये वेबिनार जब हुआ तो हमने क्या किया, वहां पे एक सिस्टम डेवलप किया, फैसिलिटीज प्रोवाइड की, लाइट फैन जो भी एसी वगैरह, स्क्रीन प्रोजेक्टर वगैरह, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है मतलब किसी पावर प्लांट से आ रहा है, तो उसका भी एक कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो सिमिलरली क्या हुआ, कार्बन फुटप्रिंट बहुत सिंपल हो गया, यू कैन एबल टू मैनेज योर ओन कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एनी ऑफ योर एक्टिविटी, राइट। तो उसी तरह कार्बन वाटर पे जैसा स्ट्रेस लाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट का कंसेप्ट जो लाया गया था, दैट इज टू मेक द पीपुल अवेयर अबाउट द क्लाइमेट चेंज, कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली एक कंसेप्ट आया है वाटर फुटप्रिंट के रूप में, कि अपने जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका वाटर रिसोर्स पे भी इम्पैक्ट है, राइट। तो उसको मेजर करने के लिए आया एक कंसेप्ट ऑफ वाटर फुटप्रिंट। सो वी कैन make the people aware by calculating or knowing their own water footprint, कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, डेली एक्टिविटी है, खाना बनाने से लेके जो भी रूटीन एक्टिविटीज अपने फॉलो करते हैं अपने घर में, उसका एक वाटर फुटप्रिंट निकाल सकते हैं। तो सो दैट विल मेक द पीपल अवेयर कि मैं कितना पानी कंज्यूम कर रहा हूँ एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर ग्लोबल वाटर रिक्वायरमेंट और ग्लोबल वाटर रिसोर्स। तो वो चीज कर सकते हैं। देन वाटर शेविंग, जैसे मैंने कहा कि इंक्रीज द एफिशिएंसी, प्रोसेस का एफिशिएंसी ला सकते हैं इंडस्ट्रीज में, या अपने ऐसे क्रॉप ग्रो करें दैट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वी शुड ग्रो वाटर resistant crop rather than crop which is requiring huge amount of water, right? So or we can reduce evapotranspiration. Different process are there, different mechanism is there through which you can reduce the evapotranspiration. So it is like this. एक सिंपल एग्जांपल, सपोज मैं कह रहा हूँ, मेरे को कोई जैसे वी आर आई मीन सेलिब्रेटिंग दैट मिलेट ईयर एंड सो ऑन, राइट। मिलेट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायरिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अपने वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे बाजरा वगैरह होता था, ठीक है, एक समय था लोग वहाँ बाजरे की रोटी खाया करते थे। अब बाजरे की रोटी का चलन खत्म हो चुका है, वहाँ गेहूं की आटे की रोटी खा रहे हैं। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, गेहूं का उत्पादन जो था, प्रोडक्शन था इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता था, वहाँ के जो ट्रेडिशनल बाजरा वगैरह को खेती करा करते थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो उस बाजरे को रिप्लेस किया गया गेहूं से। ठीक है, बाजरे की रोटी कब किसी को पसंद नहीं है, गेहूं की रोटी ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा यानी स्वादिष्ट है या जो भी है, कहने का मतलब। लेकिन जो अपना जो ट्रेडिशनल फूड था उस रीजन का, जहाँ पे बाजरा का अच्छा खासा पैदावार होता था, वो धीरे धीरे कम हो गया, एकदम मिनिमम हो गया, सब लोग गेहूं की खेती करने लगे। बट इसका इफेक्ट क्या है, गेहूं का जो है खेती, वो दैट रिक्वायर्स मोर वाटर देन बाजरा। ओके, तो ऐसे करने से जो खेतों में पहले बाजरा की खेती होती थी, अब वहां पे गेहूं की खेती होती है, तो इससे क्या हुआ, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ गया अपना। ठीक है, हमने किसी हाउ अपना जो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया, वी हैव एबल टू एलिवेट आवर दैट economic status, we can able to remove malnutrition and so on. But at the same time, what happened, we have knowingly or unknowingly increased our water dependency, we have increased our water requirement. तो ये जो मिलेट ईयर्स सेलिब्रेट भी किया, इसका एक यही पर्पस था कि जो ट्रेडिशनल मिलेट्स वगैरह थे, जैसे बाजरा आप उसको वहाँ पे करते हैं, उनका ग्रो, उनका क्रॉपिंग को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। बिकॉज न्यूट्रिएंट बेसिस में और वाटर रिक्वायरमेंट बेसिस में दे आर सपोज टू बी मोर सुपीरियर देन एनी अदर क्रॉप्स। आई मीन गेहूं से भी ज्यादा सुपीरियर माना जाता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में या वाटर रिक्वायरमेंट में, दे आर मच बेटर देन। सो वी कैन अगेन गो बैक टू आवर ओल्डर सिस्टम, माय पॉइंट ऑफ सेइंग दैट, राइट, so as to decrease the water requirement in agriculture sectors, right? और ऐसा हो सकता है कि सपोज चावल है, गेहूं है, तो चावल की पैदावार कम किया जा सकता है। चावल, पैडी रिक्वायर्ड वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू व्हीट इटसेल्फ। लेकिन जहाँ पे
कभी चावल देखने को नहीं मिलता था। सपोज वेस्टर्न राजस्थान, गंगानगर, श्री गंगानगर एरिया है जहाँ पे कभी शायद आज से 50-60 साल पहले चावल देखने को नहीं मिलता था। वहाँ चावल की खेती हो रही है, बासमती राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी नहर जो है, पानी मिल गया तो वहाँ खेती हो रही है। तो जो चावल में को पैदा करने के लिए जो इतना पानी की जरूरत होता है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल इन दैट रीजन अदरवाइज। लेकिन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, भाकर नंगल डैम से पानी आ रहा है, दे आर ग्रोइंग राइस ओवर देयर, सो दे हैव चेंज देयर क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, that is good for them for time being, for short duration it may be very good for them, but long run में वो कभी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो अवेलेबल वाटर रिसोर्स है, वो कभी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, right? So we have to be adapt ourselves, our lifestyles, our economic activity that is suited to our climate only. Climate की वजह यदि हम if you will go otherwise, then that may be give you a good result for a very short time, but in long run you will definitely face some kind of consequences which may not be irreparable, right? So that is why we have to think of the word that, and that the term is basically called the increasing crop per drop of water. For every drop of water we have to increase the crop of growth, crop production, right? And another concept, that is the trade of water. Virtual water means though we are using it is a very similar concept to carbon dioxide and so on, because climate change के समय में you must have heard a term carbon credit. कार्बन क्रेडिट, तो इसका मतलब, या कार्बन न्यूट्रल कंट्री, कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस, कार्बन न्यूट्रल रीजन, ये सब कंसेप्ट आया गया। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विल हैव सर्टेन इम्पैक्ट ऑन इट्स रिसोर्स, मे बी लैंड, मे बी वाटर, मे बी क्लाइमेट, इफेक्ट होगा ही होगा। हम आज जैसे मैंने कहा कि वेबिनार कर भी रहे हैं, तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ रहा है अपने क्लाइमेट पे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, बट क्योंकि जरूरी है, वेबिनार तो करना जरूरी है, राइट? तो अपने कर रहे हैं वेबिनार, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक व्हाट कुड बी डन सो दैट इट्स इम्प्लीकेशन ऑन से क्लाइमेट विल बी मिनिमम। क्या करें इसे मिनिमम, राइट? हो सकता है इसको यदि फिजिकली कंडक्ट करवाते तो ज्यादा होता। तो अपने पास एक नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो आप इसको वेबिनार के फॉर्म में करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कहीं ज्यादा होता। लेकिन अब वेबिनार करें तो डेफिनेटली कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ है, लेकिन है कार्बन फुटप्रिंट। सिमिलरली, तो जिसके पास जो ज्यादा एक्टिविटी हो है, जहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है वहां पे उसका फुटप्रिंट ज्यादा होगा, मे बी कार्बन, मे बी वाटर। तो वो क्या करेगा, सपोज एक मैं कह रहा हूँ अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक पावर है, सुपर इकोनॉमिक पावर, बिकॉज ऑफ सो मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन, सो they may be producing huge amount of carbon dioxide, they may be producing huge amount of pressure on the available water resource of our earth, बट वो क्या करेगा कि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोई कम करने की कोई नहीं सोचेगा। सब चाहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, जिससे पैसे आए, लोगों की प्रोस्पेरिटी आए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सभी लोग चाहेंगे। बट एनवायरमेंट को बचाएंगे लोग क्या करेंगे, ठीक है मैं अपने कंट्री में, अपने रीजन में तो नहीं कर पाऊंगा, मैं पेड़ नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि एक पेड़ लगाने में जितनी जगह हुई, एक मान लीजिए बॉम्बे में किसी को हम कहें कि भैया आप अपने 5 स्क्वायर फीट जगह में कुछ गज पौधे वौधे लगाए, छोटा सा कुछ क्यों लगाएगा, जहाँ पे एक स्क्वायर फीट कीमत इतना है कि 25,000, 30,000, 50,000 एक स्क्वायर फीट का, तो वहां पे कौन गज लगाने के बारे में सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसी जगह में गज, ठीक है मैं यहाँ नहीं लगा सकता गज, पौधे नहीं लगा सकता, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कहीं और लगाता हूँ। सपोज मैं जाके झारखंड में या कोई नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, वहां पे जहाँ पे खाली जगह काफी है, वहां लगा देता हूँ। सो दैट इज द ट्रेडिंग, कि मैं यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पे झारखंड में, मुंबई में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट झारखंड में कहीं पे फॉरेस्टेड एरिया में या कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं कहीं पे फॉरेस्ट लगा के उस कार्बन को कंपेंसेट कर रहा हूँ। दैट इज अ ट्रेडिंग, दैट इज ऑल्सो ट्रेडेबल। वो जैसे स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक वगैरह का ट्रेडिंग होता है, तो ये भी कार्बन क्रेडिट भी ट्रेडिंग होता है, कंपनियां खरीदती हैं बेचती हैं, वैसे ही होता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर वाटर ऑल्सो, राइट? इंपोर्ट ऑफ फूड, जैसे मैंने कहा कि सपोज अपने पास वाटर का शॉर्टेज है, तो अपने क्या करेंगे, धान की खेती नहीं करेंगे, लेकिन चावल भी पसंद होता है, कई बार खाने में अच्छा लगता है, तो क्या करें, हमेशा तो रोटी नहीं चलेगी, चावल भी खाना है, तो अपने क्या करें, सपोज अपने बांग्लादेश से ले आए,
बांग्लादेश में भी चावल अच्छे पैदावार है, तो हम बोलेंगे ठीक है अपने भारत में चावल की खेती नहीं करेंगे, अपने चावल खरीद लेंगे बांग्लादेश से। दैट इज काइंड ऑफ पॉसिबल, राइट? सो क्या किया जा सकता है इन दैट सिचुएशन इफ वी वांट टू मैनेज आवर वाटर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन, व्हाट कैन बी डन? A balance is required, always a balance is required. And if you see whatever water is available किसी भी form में, whether it is available in the form of water vapor in our atmosphere, whether it is available in terms of ice or in high mountainous peak, or whether it is available in the surface water in the form of pond, lake, reservoir, or flowing water in river, or maybe underground water, whatever the form of water, wherever it may exist, this can be studied in a very what is called as a naturally defined laboratory within which we can study this process, because water is there, water can exist in both in all the three phases like solid, liquid, and gases, and that may be available in the form of in high mountainous peak. It may be available in the form of standing water like pond and reservoir. It may be available in the form of flowing water like river. It may be found below the surface in the form of aquifer or groundwater, right? So all this water has some kind of interaction with each other, and if we have to manage the water resources, we have to understand the interaction between that water resource, and you must be knowing that they are interacting through a process that is called hydrological cycle also, right? And if we are able to understand that hydrological cycle properly, then we somehow able to manage our water resource also. But to understand water resource hydrological cycle, where, because everything is in nature, it is a kind of there is no boundary, because we have created a boundary. Suppose Haryana, Punjab, they have some kind of conflict regarding the usage of water, right? कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए, they may have some conflict. We have conflict in Tamil Nadu, between Tamil Nadu and Karnataka regarding the usage of water. We may have conflict with Pakistan regarding the usage of water of different tributaries, river of Indus river and so on. So but thing is that the boundary is created by human beings. वो जो boundary है, international boundary या state boundary, वो हमने बनाया है, nature ने नहीं बनाया है. ओके, हम बोलते हैं कि ठीक है ये एरिया, ये जो पहाड़ का रीज है, रीज ऑफ द माउंटेन इज नाउ बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स, और जो ये रिवर जो बह रही है इसके बीच ये रिवर बाउंड्री है, वो अपने डिफाइन किया है. मीन्स उस रिवर में पानी कहीं कहीं से आ रहा है, सभी स्टेट से आ रहे हैं, वो रिवर कई स्टेट्स को के थ्रू फ्लो करती है, तो किसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा वो आपस में अपना डिस्प्यूट हो सकता है. बट उसको यदि अपने उसका वाटर को यूसेज को स्टडी करना है, देन वी हैव टू थिंक ऑफ ए बाउंड्री व्हिच इज जनरेटेड बाय नेचर इटसेल्फ. ऐसी बाउंड्री के बारे में सोचना होगा जिसको नेचर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया. हेलो हेलो, am I audible? Yeah, you are audible, sir.
Okay, sorry. Am I audible now? Yeah, sir, you are audible. Actually, there is a problem of internet connectivity in my side. Okay, sorry. It's okay, sir. No issue. Okay. So what I was telling that what should be done in that situation, because we need to study that hydrological cycle in a natural defined boundary or laboratory, you can say, and that natural defined boundary is basically called as the watershed. So watershed is what? It is a kind of naturally defined or naturally defined boundary in which all the waters or excess water falling in that region flow through a system of channel and leave that boundary through a single outlet, and that we call as a watershed, right? So watershed is a naturally defined boundary. Okay, first thing you have to understand that naturally defined boundary. So what will define that boundary? Mostly the mountainous region, ridge of that mountain. In a topographic map, you will able to identify that ridge line. So that ridge line, which is naturally existing on the earth's surface, that will define the boundary, and whatever water will fall within that region, rainfall water and so on. So that rainfall water, after meeting out all the requirement, all kind of abstractions like uh, absorptions and say interceptions, evapotranspiration and so on, the excess water will be appear as a runoff. Okay, runoff, surface runoff. That surface runoff is subsequently make a channel to form a kind of stream, and that subsequently flow like a stream flow, right? So that through that stream it will now leave the system through a single outlet. So that system is basically called as a watershed, right? And this is one thing. Second thing is that over the period of time, though we have to study that watershed management, but we should not do that in a traditional way. Why so? Because over the last 30-40 years we have been able to develop the things in a digital modes only, like we have a lot of data are available in digital format also, which can provide you an opportunity to study that hydrological cycle in a watershed level. Okay, and through a more better way, because you see, just watershed means it's a huge land piece of land, and getting the characteristic of that land in terms of its soil, in terms of its topography, in terms of its land use and so on, it is a very difficult task. So it cannot be done in a traditional or conventional way with so easily and so accurately. So that is why we a kind of digital revolution has been brought out by the remote sensing, GIS, and other geospatial technology. So we have to go for such kind of technology, geospatial technology, which offers you an opportunity to study the different characteristic of the watershed in a more accurate way, in a very more short span of time, right? And it also offers something which is not visible also. Suppose if I have to find out the soil moisture content of a particular region, what I have to do? I have to set up instrument in the different locality in that watershed, soil moisture probes and so on, to find out the soil moisture content. Otherwise, I have to take a sample of that soil, bring it to the laboratory where I have to keep it gravimetrically. I can able to find out water soil moisture content, because I have to measure the available moisture content of the fresh sample of water, so fresh sample of that soil, and then I have to put it in a oven for a particular time to make it completely dry, and again I will make the weight of that soil, and whatever the difference in the weight of that soil I will get, that will contribute to the soil moisture. Likewise I have to do, but that technique is, see, very tedious, hard working, and may not be accurate, because how many samples we can able to collect in a watershed? Very small number of samples, right? Because it cannot be possible to collect sample from each and every locations. But this geospatial technology, specifically your remote sensing, can able to provide you an opportunity to find out that soil moisture content for each and every piece of every inch of that land itself, right? So that is how the usage of this geospatial technology, especially the remote sensing, GIS, and GPS, and other technology like computer programming, can able to help you to understand
this characteristic as well as how that characteristic is affecting the hydrological cycle. Because if you see hydrological cycle, we have different components are there. For example, suppose rainfall or say precipitation is an event. It's a part of our hydrological cycle. So similarly, we have evapotranspiration, we have surface turnup, we have infiltration, percolation is there. So all these component of our hydrological cycle are largely controlled by the different characteristic of the watershed. And to know that characteristic of watershed in a conventional way is almost, a difficult task. Even it is possible, that may not be that much accurate. तो इसलिए हमको क्या करना होगा? We have to go for a digital technology that is called geospatial technology to study that hydrological cycle at watershed scale. Watershed, then only we will be able to manage our water resource in a proper way, right? Okay, we have already discussed what is that watershed as such, right? It's a topographically delineated area drained by a stream system. I have already told you, because whatever rainfall, excess rainfall will be there, that will flow. First overland flow will be there. That overland flow will concentrate itself to make some channel, maybe the first order stream, second order stream, and subsequently the final order stream or the mainstream of that system. And that mainstream of the system will carry that water to its outlet. Okay, so this is a very natural things, and we can able to study the each and every component of our hydrological cycle within that boundary itself. Okay, so that is important. We have already discussed it. Okay, but one important thing is that, as I told you, that watershed is a naturally defined boundary, and that natural boundary are basically the ridge line. Mountainous ridge line will define that boundary. So it is a kind of hierarchical kind of structure is there. Means suppose it can be of any size also, right? Any size of itself. So depending upon the size of the watershed can be renamed as differently. Suppose if we study the suppose Ganga River. So Ganga River starting from Gangotri to its final fall in Bay of Bengal, it travels a long distance of around how much distance? It is around to 2,500 kilometer and so on suppose. So and during that its course of 2,500 kilometer, it is collecting water from different region, and it is not only the main Ganga river which is collecting the water, but it also get water from its tributary rivers also. Suppose Yamuna is there, suppose Gandak is there, and so many different tributary river is there. So that tributary rivers are also getting water from the nearby land surface. So if you want to define the catchment, if you want to study the uh, hydrological cycle for a channel or a system which is spreading over from Gangotri to Bay of Bengal, right? It will be creating, it will encompass a very large area. ये बहुत ही बड़े एरिया में होगा. तो उसको अपने जब पूरे रिवर के लिए, मेन रिवर, जैसे अपने कहते हैं रिवर, कौन कौन से रिवर है? सपोज वी से रिवर इज से ब्रह्मपुत्र एक रिवर है, गंगा एक रिवर है, यमुना उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है. अपने उधर जाए तो सपोज साउथ में कावेरी है, गोदावरी है, कि अपने वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा है, कि इधर उड़ीसा में हमारी महानदी है. तो these are the major rivers. These rivers has got different tributary rivers, है ना? तो if we have to study that hydrological cycle for a land area from where all these rivers are getting their water, then it encompasses a very large area. So we will not call that large area as a what? Watershed. Then we will call something else. So depending upon the area, how much geographical area over which that river system is collecting the water, we will give them some different names also. The largest one being the water resource region. Okay, water resource region. Suppose North India water region, South India, or say Deccan region, Deccan Plateau region, like this. So these are large water resource region. Okay, it have a size of suppose around say how much? This is 55 million hectares of land.
it would be a size of 55 million hectare of land. Suppose it is something like this. So similarly, the basin means regarding the river. Suppose Ganga, the land over which Ganga river is receiving the water, that is called basin. Similarly, for Narmada, we will have a piece of land over which it is collecting the water. So we have a Ganga river basin, we have a Narmada river basin, we have a Godavari basin, we have a Kaveri basin, we have Mahanadi basin. So this is for the entire river only. Okay, and it may be of size of say 9.5 million hectare and so on. And as I told you that these main river have certain tributary rivers. जैसे गंगा का एक tributary river हुई यमुना, तो यमुना का जहां से भी पानी आ रहा है, यमुना जहां जहां से पानी कलेक्ट करके बहती है, तो that is called as the catchment. तो है ना, गंगा का क्या है, बेसिन है, यमुना का क्या होगा, कैचमेंट होगा. तो इसका साइज कितना होगा, सपोज 3 मिलियन टेकर. और वो उसमें भी कई सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं, तो उनका जो होगा रीजन जहां से वो वाटर कलेक्ट करे, उसको कहते हैं सब कैचमेंट. एंड सब्सिक्वेंटली वी विल हैव वाटरशेड, सब वाटरशेड एंड माइक्रो वाटरशेड लाइक दिस. तो माइक्रो वाटरशेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टडी दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड कैन हैव ए साइज ऑफ अराउंड 1000 हेक्टेयर. सबसे छोटा एरिया जो कि वो 1000 हेक्टेयर का होता है, जिसपे अपन अपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को स्टडी कर सकते हैं. और मैक्सिमम कितना हो सकता है, सपोज एक रिवर के लिए बेसिन होता है ना, 9.5 मिलियन का, और उससे ज्यादा बड़ा हो तो सपोज वाटर रिसोर्स रीजन, राइट, लाइक दिस. एंड next you can see this is a map which is showing you the different water region of India, means different regions, water resource region, different basin, different catchment, though it may not be that much clearly visible, but this map is available in website in many I have just downloaded it from the soil and land use survey of India. soil and land use survey of India का साइट से मैंने डाउनलोड किया है इमेज. और जो मैप दिख रहा है, that is the map in 1:1 million scale. तो इसीलिए बहुत small scale map है. Being a small scale map, you may not be able to interpret the different things that have been shown here. So statistically I have shown here. Statistically मैंने यहाँ पे क्या शो कर रखा है इस मैप में, 6 रिवर रिसोर्स रीजन है, 35 बेसिन है. जैसे मैंने कहा कि गंगा के लिए एक बेसिन है, महानदी के लिए है, गोदावरी के लिए है, कावेरी के लिए, उसी 35 बेसिन इस मैप में शो किया गया है. उस 35 बेसिन के अंडर में क्या है, 112 कैचमेंट है ना, 112 कैचमेंट है. उस 112 कैचमेंट के अंदर में क्या है, 500 सब कैचमेंट है. उन 500 सब कैचमेंट के अंदर में क्या है, 3237 वाटरशेड है, एंड सो ऑन. माइक्रो वाटरशेड इसमें शो नहीं किया जा जाएगा बिकॉज इट इज ड्रॉन इन ए स्केल ऑफ 1:1 मिलियन, स्मॉल स्केल मैप है. इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दैट micro watershed, but from river resource region to watershed have been shown in this map. You can study, you can see how many watershed or sub catchments are there in your own state of Haryana. आप निकाल सकते हो, पता करेगा कितना है, you can identify from this map itself. Okay. Okay, हमने कह दिया कि अपने को जो भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, यदि हम चाहते हैं कि if we want to study our water resource in a naturally defined laboratory, say watershed, ठीक है, अच्छी बात है, हमने मान लिया. लेकिन क्या कुछ होता है इस एक वाटरशेड में, क्या कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहती हैं, जो कि नेचुरल भी है, कई बार ह्यूमन इंड्यूस भी होती है. मैन और जो ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम है कंटिन्यूअसली वाटरशेड में चलते रहते हैं. So let us know what are those problems which is occurring regularly or continuously in a watershed, either through natural process or through human activity, right? So soil erosion, जैसे मैंने कहा था, soil erosion is very simple things which is happening in the catchment in a watershed. Water pollution, जो भी human activity है, right? Whatever human activity, whether domestic use है, उसका इंडस्ट्रियल यूज हो या एग्रीकल्चर यूज हो वाटर का, that will going to cause some kind of water pollution in the region. It is inevitable. Yeah, we can minimize it, but we cannot bring it to zero level. It is not possible. Deforestation is going on. We know the importance of tree as such. We know the importance of forest in managing the water resource, water level of a groundwater level, and so on. So deforestation is going on for different developmental activity. We have to widen the road. We have to create a new airport. We have to establish new factories
For that purpose, we have to open new open cast mining for to excavate say coal and other mineral resources. So for all these activity, every year very good amount of natural forest is being degraded every year. So that degradation of natural forest is also a kind of a serious problem for managing the water resource. So that is happening. Unsustainable land use practice. कई बार क्या होता है कि दो land use is there, but that is not sustainable. Suppose जैसे कह रहा हूँ, for example, shifting cultivation. You might be knowing that, though it is not practicing in your state, but there are some states which are hilly states dominated by the tribal people. In that region, shifting cultivation is very common. नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या किसी भी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में एरिया में जाएंगे, वहां पे यू विल फाइंड दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस. उसमें क्या होता है, जंगल का एक हिस्सा को काट देते हैं और उस जमीन को फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं. क्योंकि जंगल जब पहला पहला कट के जो जमीन निकलती है तो उसमें वो काफी फर्टाइल लैंड होता है, अच्छा खासा क्रॉप प्रोड्यूस होता है. बट क्योंकि हिली एरिया में है तो सॉइल का थिकनेस भी कम होता है. बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी सॉइल इरोजन होता है. 3 4 5 सालों में उसकी प्रोडक्टिविटी उस जमीन की, उस लैंड की डिक्रीज हो जाती है. तो वो लोग क्या करते हैं, उस जमीन को यूं ही छोड़ देते हैं एज ए फेलो लैंड, और कहीं और शिफ्ट होकर वहां का जंगल काट के वहां खेती शुरू कर देते हैं. So that kind of practice is common, though have been reduced a lot by some government initiative. But in earlier days, even currently also it is going on. But you will find that kind of practice mostly in the hilly and tribal dominated area. It is very common practice. Water logging, जैसे मैंने अभी करनाल का एग्जांपल दिया था, because of excessive irrigation of water, वहाँ क्या है, water table rise कर रहा है. Because of that, we are facing a water logging problem. यदि मेरे को अच्छी तरह से याद है, मैं जैसा भूल रहा हूँ, तोसाम एरिया से, मैं जब भिवानी में बहल में था तो वहां से जब भिवानी जाते थे बाय तोसाम, तो वहां पे रोड का कई सारे अंडुलेशन थे, यानी रोड ऊपर नीचे से कर्व टाइप बने, वेव टाइप बना हुआ था. तो कई बार पूछने पर मालूम हुआ कि बिकॉज ऑफ वाटर टेबल ओनली दिस थिंग हैज हैपेंड, यानी द रोड इज काइंड ऑफ वेवी टाइप का हो गया है. रोड बनाया गया था दैट शुड बी मस्ट बी लेवल्ड वन, but because of the excessive irrigation the water table has rised, and because of that what is happening that some kind of bulging has appeared on the mid of the road. So such thing is happening. I mean, my point of saying is that it is happening. So very common also, right? So water logging is going on. Land degradation, as I told you, जैसे land degradation का मतलब क्या, wasteland. Suppose एक एग्रीकल्चरल लैंड था जहाँ पे खेती हुआ करती थी, एक्सेसिव इरिगेशन हुआ, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, बट कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, बिकॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी. सो वो लैंड, दैट लैंड इज नो मोर इकोनॉमिकली वायबल टू ग्रोइंग क्रॉप ओवर देयर. सो इस तरह का लैंड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन. हम लोग क्या कर रहे हैं, कई बार माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग जिसे मैं कह रहा था. तो to extract that mineral resources, what we have to do, we have to excavate that earth surface. So in so doing, what is happening again, we are degrading the land. जो excavation होगा उसकी वजह से जो top soil, जो top material, earth material निकलेगा, उसको कहीं और dump करना होगा. So we are degrading that earth surface or land basically. कहीं पे solid waste generate हो रहा है, huge amount, power plant है, coal waste power plant है, तो वहां पे क्या हो रहा है, fly ash produce हो रहा है, fly ash को कहीं पे dump करना है, जहां भी डंप करेंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड ओनली. So land degradation is also going on simultaneously. Sometimes we are domesticating different types of different animals like goats, sheep, cows for animal husbandry and so purpose, dairy purpose and so on. So overgrazing, because we don't have our pasture land, so we depending on the community level pasture land or some forested area or land very close to the forested land. So when we allow our domesticated animal to graze over such land, so that overgrazing may also affecting the that particular land, because the naturalness of that land is get destroyed over the period of time. Okay, vegetation will be removed, no, okay, soil will get eroded because of that overgrazing and so on. So it is very common thing, sir, right? So it is going on, everything is going on. So and all these things basically threaten the health of our watershed, because watershed में क्या होना चाहिए कि एक पानी जो है बह रहा है, that should be flow naturally
there should not be any kind of hindrance. हम उसमें क्या कर रहे हैं कि एक dam बना दे रहे हैं. So because of the construction of dam, the natural flow of water is now obstructed. Right? Natural flow यदि obstruct होगा तो क्या होगा? जो dam के downstream में everything will be changed. ठीक है, upstream में पानी है, ठीक है, रिजर्वर है, सब कुछ है. Downstream में at a very long distance, what will happen? They will not get the sufficient of water. जो नदी के किनारे जो जमीन थी जहाँ पे खेती हुआ करती थी, अब उनको पानी नहीं मिल रहा है. So it is an impact. Of course, environmental ecology भी effect होती है, but my point of saying is that by manipulating the land use, जो भी जमीन है उसमें उसको कैसे यूज कर रहे हैं human beings for agricultural activity, for mining activity, for providing housing facility to the people, we are manipulating, we are changing the nature of that land, and because of that, what is happening? The health of our watershed is also deteriorating day by day. Okay, and to what extent it is deteriorating, how it is deteriorating, and if it is deteriorating, how it will affect the functioning of hydrological cycle within the boundary of watershed. If you want to know again, in that case, your geospatial technology will help you to understand in a much better way. That is okay. Okay, watershed management, I have already told you, because watershed management is basically aimed at managing our resources. Managing resources means what? Land and water. If we are able to manage land and water, we can able to manage so many things, and that is why sometime we introduce a concept which is called integrated watershed management. Means when we focus on managing our land and water in a scientific way, along with that, if we introduce something like livelihood or the economic activity of that region, then it will be more prudential, more useful, and that is why the concept of integrated watershed management is also there. Not that much different from simple watershed management, right? But in simple watershed management, you may not include the economic activity of the region. Say agriculture, what is agricultural activity? Say what is the livelihood of the people? If you will perform some kind of watershed management practices, how it will affect the livelihood of the region, and so on. So if you include that one, that is called integrated watershed management. Right. Objective of watershed management, very common, to control the deterioration of land and water. Okay, if you will consider these two, everything will be come under it only. Suppose flood control, drought control, soil control of soil erosion, and so on, everything will come automatically. The main objective is to manage the land and water in a proper way, so that the subsequent effect, like if you will not able to manage water, what will happen? In rainy season, we will face flood. In pre-monsoon times, we will face a drought-like situation, water scarcity-like situation. So that is why the main objective of watershed management is to manage the land and water properly. Why we are talking about land and so on again and again? Because everything is happening over that land only. If the nature of the land will change, then it will going to affect the water resource also, availability of that water also. That's why we are consistently talking about the land and water. They are inseparable, right? We cannot study hydrological cycle by separating land, because it's a characteristic of the land that will define how the hydrological cycle will operate, or how the hydrological cycle will get affected if the property of the land changes, right? If you talk about some steps in watershed management, recognition phase. Recognition phase means you have to identify the problem first, or the area where the problem is more. Problem is what? Where water is flowing without proper use, because the water is supposed to infiltrate, recharge the groundwater. But if it is not happening, then what will happen? That excess water will flow along the topographic gradient, and if it is flowing in a very turbulent way, then definitely will cause soil erosion. So we have to identify such regions where the problem is. That is the recognition phase. Restoration phase means we will apply some practices that will reduce this kind of things which is happening over there. Suppose soil erosion is going on because of excess rainfall.
So we will plant some tree, we will apply afforestation over there, so that that impact can be reduced, right? Third is the protection phase. Means, okay, growing natural forest is one thing, but suppose we have to intervene with some man-made features like check dam. If we will able to prepare a check dam, that will also reduce the soil erosion as well as able to store water, conserve water over there. So that is the protection phase. Restoration means something we are doing naturally, and protection means we are doing with some means man-made features or like that, right? So check dam, we have constructed a check dam. It's a man-made feature. So by so doing, we are able to store water, we are able to supply water to locality, and at the same time, we can able to reduce the soil erosion and so on. And then improvement phase. So improvement phase means whatever we are practicing in that area, that should be yield a sustainable result. Means it is not for a short time, but it is for a very long period of time. Year after year, we will get the benefit, right? So that is improvement. Suppose we have implemented something, so that implementation will yield some result. So we have to analyze that result. If it is okay, satisfactory, or very excellent one. No, it is okay, but needs some modification. Then next year we will do some manipulation to make some improvement over there. So likewise, then that will call the improvement phase, because if we are implementing something, इट विल यील्ड सम रिजल्ट. जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ठीक है, मैंने अपने पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मंडे को मैं ये पढ़ूंगा, भाई हाइड्रोलॉजी पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ूंगा, जो भी, या वेडनेसडे को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, जो भी मैंने प्लानिंग कर लिया, वो प्लानिंग एक रिजल्ट देगा. मैं एग्जाम में अपियर हुआ तो एग्जाम में कैसा रिजल्ट आया मैं देखूंगा. रिजल्ट यदि अच्छा नहीं आया तो आई हैव टू चेंज माय स्ट्रेटेजी, है ना, ताकि वो इंप्रूव किया जा सके, राइट? वो इंप्रूव कैसे. सो दैट सेम थिंग आल्सो हैपन विद वाटरशेड मैनेजमेंट, कि अब जो वाटर को कंजर्व करना है, स्टोर करना है, जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, वो यदि अपने प्रैक्टिस से अपने अचीव कर रहे हैं, दैट इज फाइन. वो अचीवमेंट क्या स्मॉल टाइम के लिए है या वेरी लॉन्ग टाइम के लिए, वो आपको देखना हुआ है. सालों साल यदि वो चीज अच्छे दे रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ चेंज. यदि नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इंप्रूवमेंट लानी है, देन वी हैव टू मेक अकॉर्डिंगली सम चेंजेस इन दैट implementation strategy, and we will get the desired result. That is improvement phase. Or interestingly, जो geospatial technology है, that can help you in every stage or every phase of this watershed management, right? Starting from recognition phase, you have to identify the hotspot where the problem is likely to be very severe, and we have to put our immediate attention over there. वैसा कोई एरिया अपने को आइडेंटिफाई करना है, then geospatial technology will help you to identify that region. Restoration phase, कि सपोज अपने पास रिसोर्सेस कमी है, अपने को अपने डिसीजन लिया कि अपने को एफोरेस्टेशन करना है, अपने को 5 लाख पेड़ लगाने, कहाँ पे लगाना, वो जगह कहाँ मिलेगी, वेयर वी हैव टू पुट दैट plantation, so that we will get the maximum result. So we have to identify a suitable site for such. और अपने को चेक डैम बनाना है, कहाँ पे चेक डैम बनाना है, आप कहीं भी तो नहीं बना सकते. ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. तो अपने को एक सुटेबल साइट ढूंढना होगा कि उस जो फ्लो है, जो चैनल है, उसका किस साइट पे, किस क्रॉस सेक्शन में अपने को वो चेक डैम बनाएंगे, सो दैट वी विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट. So in that situation also your geospatial technology will help you. Similarly, protection phase, improvement phase को भी यदि अपने को properly way में implement करना है, then in every stage of watershed management, your geospatial technology can help you to get the desired result, right? जैसे यहाँ पे मैं लिखा है कि GIS for planning and prioritizing the conservation. Basically, geospatial technology के कई सारे component है, but the most important component being the remote sensing and GIS. तो remote sensing, अच्छा अगली slide में होगा मेरे पास. Anyway, what is remote sensing? The benefit we all know that. I think we have already covered it. Okay, अच्छे. जब अपने वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटरशेड. व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज? लाइक साइज, उसका जैसे मैंने कहा था कि 1000 हेक्टेयर का है तो उसको अपने माइक्रो वाटरशेड बोलेंगे, या 9.5 मिलियन से ज्यादा का है तो उसको अपन बेसिन कहेंगे. तो उसकी जो साइज है, दैट वी हैव टू नो व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द शेप, whether it is a circular in shape, elongated in shape, or some other shape. सर्कुलर है तो क्या परफेक्ट सर्कुलर नहीं होगा, नियर सर्कुलर होगा,
इलोंगेटेड है तो कितना इलोंगेटेड है, राइट, कितना डिपार्चर है स्क्वायर से या सर्कुलर शेप से, यू नो दैट, है ना. जियोमॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर यू माइट हैव स्टडीड इन योर हाइड्रोलॉजी पेपर आल्सो, है ना. सर्कुलेटरी रेशियो, हाँ, सेफ फैक्टर ना पढ़ा हुआ. आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड ऑल दिस. फिजियोग्राफी कैसी है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे वैली है, दैट यू हैव टू नो. क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द, क्लाइमेट मींस एवरी क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, टेम्परेचर, rainfall, right, evapotranspiration, everything, humidity, you have to know that. So from where you will get this data, right? But you require all that. Drainage pattern कैसा है, types of drainage pattern, centripetal, centrifugal, trellis, different types of pattern, और से डेंड्रिटिक पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न है ड्रेनेज का, जो ड्रेनेज नेटवर्क है उस कैचमेंट का, उस वाटरशेड का, वो कैसा है, बिकॉज इट also affect the every things like how much water will be stored, how much of flooding will takes place. Suppose एक elongated basin है और एक storm rainfall होता है कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर की बारिश हुई एक elongated watershed में और एक circular watershed में, तो कहाँ पे flood आने की ज्यादा chances हैं, it will affect. So that is why we have to understand that the drainage network and its shape also. Land use, किस तरह का land use है, वो एक urban watershed है या एक फॉरेस्टेड वाटरशेड है या मिक्स वाटरशेड है, किस तरह का वाटरशेड है, वहां पे जो डोमिनेंट ह्यूमन एक्टिविटी है किस टाइप की है, माइनिंग चल रहा है, डोमिनेंट एक्टिविटी माइनिंग है या फॉरेस्ट है या अर्बन है, टोटली बिल्ट अप लैंड है, वहां पे किस तरह का वेजिटेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जियोलॉजी एंड सॉइल, किस टाइप का सॉइल है, यू नो दैट इनफिल्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ what hydrological cycle, but all soils don't have the same hydraulic conductivity and so on, right? Or they will porosity is not the same. If porosity is more water will get percolate and infiltrate to recharge your groundwater. But if the soil is like clay soil is there, having very less amount of porosity, in that situation, what will happen? A very small amount of rainfall can cause to produce runoff and ultimately cause flood. So that is why we have to understand everything, geology and soil. Hydrology means वहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है कैसा है, कब बारिश होती है, बारिश का जो पैटर्न है, 1 घंटे की बारिश कितनी बार होती है, 2 घंटे की बारिश कैसे होती है, यू मस्ट हैव स्टडी द रिटर्न पीरियड एंड सो ऑन, है ना. रिटर्न पीरियड, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व, एवरीथिंग, वहाँ उस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटेंसिटी ड्यूरेशन कर्व ऑफ रेनफॉल क्या है. Hydrogeology, socioeconomic is also very important, because when you will implement some practices, watershed management practices to manage your water and land, it will be maybe accepted by the local people or maybe objected by the local people. It depends upon the socioeconomic condition. So you have to identify that practices so that it will suit to the local people. उनका जो जरूरत है उसके हिसाब से शूट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, डैम बना रहे हैं, डैम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. होता है ना, धरना होना होता है, एनवायरमेंट जाके मेधा पाट कर खड़े हो जाएंगे कि भैया यहाँ डैम नहीं चाहिए हमको, राइट. होता है, नेचुरल थिंग्स है. यहाँ पे हमको वहाँ पे टाटा नानो का फैक्ट्री बैठा रहा था, कहाँ, सिंगूर वेस्ट बंगाल में, ममता दीदी खड़ी हो गई, नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, वो गुजरात चले गए, उठा के टाटा. तो ये होता है. सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या वो दैट आल्सो इफेक्ट, ठीक है. वो जिस लैंड में शायद टाटा अपना नानो का जो प्लांट बनाने वाले थे, वहाँ पे ट्रिपल क्रॉप होता है, ट्रिपल क्रॉप, साल में 3 क्रॉप तक होता है वहाँ पे. so, वैसे ही कई सारे थे, जैसे उड़ीसा में भी एक बड़ा यूनिवर्सिटी का जो वेदांता ग्रुप है, अनिल अग्रवाल ग्रुप का, उन्होंने कभी एक प्लांट बनाने, एक यूनिवर्सिटी बनाने का था, लाइक वेदांता यूनिवर्सिटी को, जो कि पूरी कोणार्क मैरीन ड्राइव में होने वाला था. पूरी कोणार्क बहुत ही फेमस लोकेशन है उड़ीसा का, वहाँ का मैरीन ड्राइव में उन्होंने करीब करीब 6000 एकड़ जमीन का प्रपोजल था. तो वहाँ भी वो वेरी फर्टाइल लैंड, आई मीन फर्टाइल लैंड. तो लोगों का ऑपोजिशन होता है. तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी मैटर करता है. कोई भी आप नया प्रोजेक्ट ला रहे हो तो वो वहाँ की लोकल जो नीड्स है उसका ध्यान रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट इग्नोर देम एट ऑल. आप हमेशा इग्नोर करके नहीं कर सकते. ठीक है, रोड बनाना है, कुछ जमीन चाहिए, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से एक्वायर करके कंपनसेशन देके एक्वायर कर लेगी, बिकॉज़ दैट इज अदर थिंग. बट इस तरह की एक्टिविटी जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनाना बहुत जरूरी नहीं है कि वहीं पे बनाए, कहीं और बना लो, लेकिन रोड तो वहीं बनेगा, रोड तो जहां बनना है वहीं बनेगा, राइट. तो ये सब चीजें हैं. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स. एंड माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट व्हेन यू हैव टू स्टडी योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल in a watershed, you need a diverse range of data, right, starting from climate,
land use, socioeconomic data, hydrological data, physiographic data, and so many things. So from where that you will get that data? So in that case, remote sensing can help you a lot. Okay, so remote sensing cannot help you in getting socioeconomic data, but if you want to get hydrogeological data, even hydrological data, soil data, agricultural practices data, vegetation, land use, drainage, okay, to some extent climate also, climate data, physiographic data, shape, size, everything can be possible to generate through remote sensing technology. So remote sensing can help you to get all this data very easily, right? And GIS can help you to, integrate all those data to generate the desired output, right? So this is geoinformatics, say geospatial. What is geospatial technology? As I told you, though it has got many different components, but the important being the remote sensing and GIS. What is remote sensing? Remote sensing can help you to collect the data, as you all know that, and GIS basically help you to manage, analyze, and visualize the data. If you want to manage all the data coming from different sources, different region, you have to accommodate that data, integrate that data, model that data, put them into some kind of modeling exercise. Then GIS will help you to get that one, right? So how geospatial technology can help you in managing that watershed? So first, it can help you to delineate the watershed area, like boundary of that watershed, sub watershed, micro watershed. Where is the outlet of that naturally defined boundary? Outlet you can define with the help of geospatial technology. Watershed characterization, whatever characteristic that a watershed is having in terms of the size, say physiography, slope, aspect, okay, drainage pattern, land use, land cover mapping, land use, land cover, and so on. Everything can be mapped through geospatial technology, right? And geospatial technology can also help you to identify, suppose, some kind of what is the amount of runoff taking place in a particular outlet, what is the amount of sediment yield at that outlet, okay, because sediment yield is also the biggest problem. It causes dual problem to water body. Suppose it may cause siltation of the water body, it may cause nutrification of the or eutrophication of the water body. So that's why sediment yield at the outlet is also an important parameter to be measured during watershed management or modeling. And suppose you have to implement certain important management practices like check dam, where to put that check dam, so you can identify a suitable site. So site selection can be also done with the help of geospatial technology, right? Remote sensing, I have already told you, and it's basically a technology to acquire the data regarding different objects, phenomena, or process without making a physical contact with the object. And sometimes it gives you much more than what we can able to see. Suppose if you want to know the what is the soil moisture of my locality, I cannot say anything just by looking at it. But remote sensing, through remote sensing, I can say something about it. Suppose what is the temperature, I can tell. I can tell what is the temperature of the land surface right now with the remote sensing technology. And another important thing is that remote sensing is having a synoptic view, means it cover or capture the different parameter at a one time. And it has other advantage, like it has some historic data. Suppose what was the condition of land use, land cover in your Mahendragarh town 50 years back, or say not 50, say 40 years back. Suppose in 1980, what was the land use, land cover? So you didn't have any kind of information as such. There will be no map, but you can prepare a map right now because satellite data is available for 1980s. You can, with the help of the satellite image, you can prepare a land use, land cover map for your Mahendragarh city itself. You can create. So that is the beauty. And as I told you, sometimes it gives you a data or information which may not be visible to us directly, like soil moisture, as I told you, right? And another important thing about this remote sensing is timely one and cost effective too. Nowadays, most of the remote sensing data are available free of cost, right? You can in India now we have a 𝗶 site from where you can download all this hydrological data and so on, including remote sensing satellite. And beside that, USGS site is also available. And beside that, nowadays a cloud-based
thing is also come up, Google Earth Engine. You might have heard Google Earth, but not Google Earth Engine, right? Google Earth Engine, make a Google search, and you can not only download the data, different types of data, but also make some analysis. Even if you don't have any remote sensing GIS software, you can just, even then you can analyze much more things, very many kind of special analysis over there, like management of water resource, like land use land cover mapping, or say urban sprawling. You can do so many exercises without having a remote sensing GIS software, because Google Earth Engine offers you not only the source of data, but also some kind of analysis you can do over there, okay, very easily. Okay, role of remote sensing. I've already told you, remote sensing can provide you all kind of data, right? Land cover, land use. You can perform chain detection, as I told you. What was the land use, land cover of Gangadhar in 1980? You can able to find out. Soil moisture, as I told you. Land use, remote sensing can also provide you some kind of climatic data, like rainfall data. There are so many project data is available, like TRMM, Tropical Rainfall Measurement Mission, right? You can get the data. CRIPS data is there. You can get the rainfall, temperature data, everything, evapotranspiration data, everything from remote sensing satellite. Is not measured by putting any kind of equipment over the land. It is derived from the remote sensing imagery only. And suppose topography, you want to know the topography of the region, height. Otherwise, we have topographic maps. We have to follow topographic maps, contour lines we have to draw, and so on. But nowadays we are using digital elevation model. Instead of contour line, we are using डिजिटल एलिवेशन में. कहाँ से मिलेगा? सैटेलाइट डाटा है, बहुत सारे सैटेलाइट से अपने बना सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है. सपोज SRTM, शटल रडार टोपोग्राफिक मिशन, एस्टर डाटा इज आल्सो देयर. सो मेनी डाटा इज देयर for which you can from which you can prepare the topography of the region, है ना. कंटूर मैप भी निकाल सकते हो उससे फिर चाहो तो, बट कंटूर इज rather inferior, I will say. If you are having digital elevation model, you don't need contour line, because digital elevation model is considered to be better than contour line, right? So वो digital elevation model मिल जाएगा, rainfall मिल जाएगा, temperature मिल जाएगा, evapotranspiration मिल जाएगा, remote sensing से, satellite image से, simply. So it is available free of cost also, right? Next thing, you have to integrate all those data, right? And that is can be done in GIS environment, right? And as I told you कि आपका जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वाटरशेड डिफरेंट लेवल का है, माइक्रो वाटरशेड से लेके बेसिन तक उनका साइज अलग अलग है. माइक्रो वाटरशेड 1000 हेक्टेयर का है, बेसिन 9.5 मिलियन हेक्टेयर का है. तो क्या सब जगह सब डाटा यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका स्केल अलग अलग है. जब अपने बड़े एरिया में काम करेंगे तो अपने को एक्साइट डाटा चाहिए जो जैसा रिलेटिवली कोर्स डाटा हो, उसका रिजोल्यूशन कम होने से भी चलेगा. लेकिन अपने यदि माइक्रो वाटरशेड में काम करना चाहते हैं जिसका कि साइज 1000 हेक्टेयर का है, वहां पे अपने यदि फाइन रिजोल्यूशन डाटा यूज नहीं करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैक एनालिसिस, राइट? तो इसलिए क्या है, रिमोट सेंसिंग में भी बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में कई सारे सेंसर जो कि अलग अलग रिजोल्यूशन में डाटा को कैप्चर करते हैं, राइट? जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ लिखा हूँ, सपोज IRS P6 एक सैटेलाइट है इंडिया का, रिसोर्स सेट सैटेलाइट इंडिया का, इसरो का है. उसके पास एक कैमरा है, पेंट्रोमेटिक कैमरा है, जो कि 5.8 मीटर रिजोल्यूशन में डाटा को कैप्चर करते हैं. आइकोनोस इंडिया का नहीं है, जो कि 4 मीटर और 1 मीटर में कैप्चर करता है. इंडिया का एक और सैटेलाइट है, कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद. ये 2.5 मीटर का ये पुराना डाटा है, 2.5 मीटर. अदरवाइज सब मीटर में भी, यानी 0.7 0.8 मीटर रिजोल्यूशन में भी डाटा कैप्चर कर रहा है. कार्टोसैट इंडिया का सैटेलाइट है. तो मान लीजिए अपने को जब छोटा एरिया में काम करना है, लाइक माइक्रो वाटरशेड जो कि 1000 हेक्टेयर का ही एरिया, तो वहां पे अपने कौन सा डाटा यूज करेंगे? सपोज कार्टोसैट यूज कर लेंगे, या और एक है लीस्ट4 डाटा भी है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का लीस्ट4 सेंसर है, उससे भी डाटा जनरेट होता है. मल्टीस्पेक्ट्रल डाटा यूज होता है, जो कि 5.8 मीटर रिजोल्यूशन का मल्टीस्पेक्ट्रल डाटा है. कार्टोसैट कैन बी यूज टू जनरेट डिजिटल एलिवेशन मॉडल, लेकिन जो लीस्ट4 है वो आपको यूज कर सकते हो सपोज लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग के लिए, एंड सो ऑन, राइट? तो इसका एक मैंने टेबल बनाया है. I have just prepared a table like this, because remote sensing जो डाटा है वो different resolution में अवेलेबल है. ओके, डिफरेंट रिजोल्यूशन में अवेलेबल है. तो सब रिजोल्यूशन या स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, तो सभी स्केल सब जगह एप्लीकेबल नहीं है. कौन सा डाटा के लिए कौन सा एरिया में यूजफुल है वो मैंने इस टेबल में एक ट्राई किया है कि मैंने पुट अप करने की. सपोज लैंडसैट 8 एक अमेरिकन सैटेलाइट है, जिसमें
एक सेंसर है दैट इज कॉल्ड सपोज टीएम, थीमेटिक मैपर सेंसर, उसका रिजोल्यूशन 30 मीटर का है, लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में 11 बैंड है, मल्टीपल बैंड्स हैं, अलग अलग बैंड में अलग अलग डाटा एक्वायर होता है। तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है? आप यूज कर सकते हो इसको जब 1:50,000 स्केल में कोई मैपिंग करनी है, कोई एनालिसिस करनी है, तो वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो। मतलब कोई सब वाटरशेड में आप यूज कर सकते हो इसको, सब वाटरशेड लेवल में स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट माइक्रो वाटरशेड में नहीं होगा। सपोज माइक्रो वाटरशेड के लिए देखिए मैंने नीचे में लिखा है फोर्थ में क्विक बर्ड, ये क्विक बर्ड, ये वाला क्विक बर्ड, क्विक बर्ड ये डाटा है। इसका रिजोल्यूशन है स्पेशल रिजोल्यूशन 3.2 मीटर का है, और इसमें स्पेक्ट्रल बैंड कितने हैं? 4 है, मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा है। इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि भाई इसको अपने यूज कर सकते हैं माइक्रो वाटरशेड लेवल में, राइट, माइक्रो वाटरशेड लेवल में, ये रहा माइक्रो वाटरशेड में। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिजोल्यूशन एंड नंबर ऑफ बैंड्स ओवर विच दैट सेंसर इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, वी कैन पुट देम इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ वाटरशेड एनालिसिस। यदि अपने को छोटे से वाटरशेड में काम करना है तो अपने इस टाइप का डाटा यूज, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था IRS-P6 लिस्ट 4, ये रहा IRS-P6 लिस्ट 4, इसको माइक्रो वाटरशेड में यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अपन इसको यदि यूज करना चाहेंगे सपोज बेसिन लेवल में, सपोज गंगा रिवर बेसिन में, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि डाटा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहां पे कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी मे नॉट बी दैट मच एफिशिएंट। बहुत ज्यादा डाटा का वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से कंप्यूटिंग फैसिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, और कई बार माइनर डिटेल जरूरत नहीं पड़ता है, माइनर डिटेल नहीं पड़ता है उतना हाई लेवल स्टडी के लिए। माइनर डिटेल कब जरूरत पड़ता है? जब छोटी जगह में कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द, जब भी एक सैटेलाइट छोड़ी जाती है, सैटेलाइट उसमें कई सारे सेंसर इसीलिए फिट किया जाता है, एक कैमरा नहीं होता है किसी भी सैटेलाइट में, एक कैमरा फिट इसीलिए नहीं करते, उसमें अलग अलग कैमरा फिट करते हैं जो कि अलग अलग रिजोल्यूशन में, अलग अलग बैंड में डाटा को एक्वायर करते हैं। इसका पर्पज ही यही है कि सब हमें जो रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इतना फाइन रिजोल्यूशन डाटा यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वो कोई भी सिस्टम उसको एनालाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत छोटा सा एरिया में, मान लीजिए मैं अपना जैसे मैंने कहा कि महेंद्रगढ़ सिटी का मैं ही करना चाहता हूँ, तो मेरे को फाइन रिजोल्यूशन डाटा चाहिए, बहुत ही हाई रिजोल्यूशन डाटा चाहिए मेरे को, तो उसके लिए अलग कैमरा लगा हुआ है, राइट। तो इसीलिए आई हैव जस्ट try to summarize the different sensor, remote sensing sensor available and their specific use for watershed modeling and so on, right? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या है? वो डाटा को इंटीग्रेट करेगा, एनालाइज करेगा और मॉडलिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि अपने कोई भी चीज निकालना है थ्रू मॉडल। सपोज मैं कह रहा हूँ कि रेनफॉल है, एक स्टॉर्म इवेंट हुआ जिसमें 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, तो व्हाट विल बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? इस तरह की चीजें जब मेरे को रिप्लाई करना है, देन आई हैव टू मॉडल इट। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल होते हैं, राइट। तो उस मॉडल को मैं यूज करने के लिए क्या चाहिए? जीआईएस एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को इंटीग्रेट कर सके और उसका एक स्पेसिफिक आउटपुट दे सके। कि मान लो 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ 1 घंटे में, तो उस कैचमेंट के आउटलेट में कितना रन अप प्रोड्यूस होगा, मेरे को इस तरह। तो उसके लिए जीआईएस सिस्टम है, तो जीआईएस को बेस करके बहुत सारे हाइड्रोलॉजिकल मॉडल डेवलप किए गए हैं। वो मॉडल डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हो सकते हैं, लाइक फिजिकल बेस्ड मॉडल, एम्पेरिकल मॉडल और से कंसेप्चुअल मॉडल, है ना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डिटेल। फिजिकल मॉडल क्या होता है? जो कि बहुत सारे डाटा रिक्वायरमेंट होते हैं, प्लस वो हर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के हर एक प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देता है। सपोज इवापोरेशन कितना हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, सॉइल स्टोरेज कितना हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, तो हर चीज को वो डील करता है। तो वो फिजिकल बेस्ड मॉडल होता है। और एम्पेरिकल मॉडल क्या होता है? कि मैंने सिंपल एक लीनियर रिग्रेशन ही कह दिया, सपोज इतनी बारिश हुई तो इतना रेनफॉल हुआ तो इतना रन ऑफ होगा। एक सिंपल एक रिग्रेशन इक्वेशन भी लिखता हूँ, लीनियर रिग्रेशन, तो दैट इज काइंड ऑफ एम्पेरिकल मॉडल, है ना। और कंसेप्चुअल इनके बीच में आता है, फिजिकल और एम्पिरिकल के बीच में कंसेप्चुअल मॉडल। वो जरा सा डाटा रिक्वायरमेंट और उसका सिंप्लिसिटी को बैलेंस करते हुए मॉडल होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं। ये तो सबको मालूम है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ जीआईएस, देयर इज नो नीड एज सच। हाँ, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएस इन वाटरशेड मैनेजमेंट। मैंने जैसे कहा कि सपोज ये डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है, कैप्चर करता है, एनालाइज करता है, और जब भी अपने को कुछ रिक्वायरमेंट होता है एज पर अपने क्वेरी, स्पेशल क्वेरी की अपने कुछ चीज चाहिए, तो उसको वो निकाल के देता है। रिक्वायर इट डिलीवर्स द डिजायर्ड आउटपुट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। आपने जो भी क्वेरी करेंगे उसके बेसिस में वो आंसर देगा अपने को। तो ये सब में ये यूज होता है, राइट।
So this is the use of GIS, and so what is the benefit of using this geospatial technology? So we can as such run the watershed management practices without using geospatial technology also. But the problem is that it is time consuming, may not be that much accurate, and also highly cost demanding. So in order to bringing out more efficiency or more accuracy, it is always advisable to use geospatial technology for watershed management. It is offering you multiple benefits like easy to implement, simple to understand, okay, simple to understand, quick, accurate, and cost effective. With this number of benefits, you can, uh, since it is offering, so you can use geospatial technology for what is called as this watershed management. I think we are running out of time. So instead of discussing the case study, I am just coming to the conclusion how geospatial technology is basically contributing. So first of all, that we have to understand that watershed is a very important features over which we have to study our hydrological cycle so as to make understand of our available water resource and water usage and so on. Okay, and being very complex in nature, because watershed is very complex, so many activities are going on simultaneously at many different scale. So getting that all those information is too difficult. We cannot get it. Suppose historical data is required, we cannot collect the historical data. Suppose today we have planned to do something, but how the changes in agricultural practices has affecting our available water resources. So first of all, we have to understand what was the agricultural practices was there in the past, suppose 30 years or 40 years back. So such data is collecting such data is very difficult, sometimes impossible also. So remote sensing basically help you to get that historical data, past data, right? And in that sense, you can say geospatial technology has revolutionized the approach of watershed management, we can say. And for the deeper understanding, suppose we have so many complex data is there, so if everything remain the same, if one particular thing changes, then how the process will be affected, hydrological process. Suppose everything remain the same, only population has increased in a particular watershed, then how the water requirement will change if you want to know. Or everything remain the same, if the climate change or temperature of that region has increased, how the water resource will be get affected. If you want to know all those things, or in a very complex way, population is also rising, temperature is also rising, in that situation how the water resource will be get affected, such complex situation if you have to analyze and discuss, then in that sense also geospatial technology or basically the GIS based hydrological model can help you to get that answer, right? And of course, as I told you that the geospatial technology are now available very easily. As I told you that a simple example of Google Earth Engine itself, it is available free of cost. Only thing you have to have a Gmail account, and with that Gmail account, you can run that Google Earth Engine for the geospatial analysis, any kind of analysis like land use, land cover change, or even water resource related project you can carry out. You won't have to require anything. Only you have to be a Gmail account and a laptop and internet connectivity. That's all. With that, you can run a very good. Run different water resource related project, means whether it's related to urban water supply, or say rainfall runoff relationship, or say managing the overall water resource of the region, or agricultural water requirement. Such kind of a project you can perform using that Google Earth Engine and environment, right? So my request to all of you, that you being the students of civil engineering, BTech civil engineering, and you must have to go for a kind of your end semester project work and so on. So I will rather suggest you that you should try to explore all this geospatial technology for your BTech project work also. And you must explore your Google Earth Engine also. Why I'm saying you like that? Because traditionally you might be working on very different way laboratory work and so on, but it is something which is not so much traditional, it is evolving. And if you have some thing, you'll develop yourself in that area, then your opportunities also
getting an opportunity, more opportunity means you will be more employable. I mean, you will get some new avenue for getting a job also. Suppose Geoinformatics, you can directly go to any software company and so on. And many other avenues are there where you can explore yourself. Only thing is that you have to learn some of the skill of geospatial technology, remote sensing, GIS. If you are convenient with some kind of computer programming, mostly Python is running nowadays is the time of Python. So you have to learn Python. You have to learn uh, little bit of understanding of remote sensing and GIS. Then if you're able to do so, then I am giving you a word that you will definitely get a job in any software company also. It's my word, and you must explore it. So this is from my side. So thank you very much for patience listening. And if you have any queries and doubt, then please, I'll be happy to answer your queries. Thank you, sir. Thank you for sharing knowledge with us. Now I request to students, they can ask questions. We have received some questions from Facebook also. Okay, sure. Meanwhile, if they have student have question, they can put in a chat box. We will take from there. First question is, sir, what are the main challenges in using geospatial technologies for water resource management? As I told you, the technology is an evolving technology. Every day, some changes are being coming into the pictures, right? So it is a very similar to software technology, because this geoinformatics, the geospatial technology is depending on the development of sensor. If you see the sensor, which is maybe more or less a kind of electronics engineering and so on. So if some changes is bringing into the pictures through changes in some electronics equipment and so on, the changes will be reflected in its application parts, specifically geospatial application parts. Similarly, computer programs. Suppose earlier days we are talking about C, you might have studied C in your BTech also, but you cannot, there is hardly any chance to use C, suppose, for geospatial. Nowadays, as I told you, Python, it's a open source language is there. So if you are able to learn that Python, then you can make a use of this. Sometimes we are talking about Visual Basic also, because with the Visual Basic, you can prepare some kind of menu-driven programs and so on. But nowadays, it is basically you have to be what I can say that you have to be continuously monitor what is going on in the market, how the technology is changing. And if you want to make your career in this area, geospatial technology, then definitely you have to be a little bit efficient in computer programming. If you know Python or any one more program, then I will say you will on the right track and you will get a very good job. So as such, there is no hurdle. As I told you, there is no constraint of ability of data, no constraint of ability of resources. You will get that resources from freely from. If you want to learn, suppose you do not know Python, but you want to learn, so many YouTube lectures materials are available nowadays. Or otherwise, you can join some kind of workshop and so on to learn, to make you what is called as conversations with this kind of language. So that is depends on your own interest, whether you are agree or ready to get that knowledge or not. That is the constant, I will say. So it's your attitude, your learning attitude will define your path. Okay, if you are ready to learn, I think there is no hurdle as such. Everything is available free of cost. Only thing that you must have some interest to learn those things. And if you are a continuous learner ready to learn those things, I cannot see any problem. There is no problem as such. Sir, are there any specific geospatial tools or software that you recommend? नहीं, जैसे मैंने कहा कि टूल्स तो कमर्शियल टूल्स आर आल्सो अवेलेबल. जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत सारे कमर्शियल टूल है, लेकिन क्यों जाएंगे जब अपने को कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हम कमर्शियल टूल में क्यों जाएंगे? द क्वेश्चन इज लाइक दैट. सो मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर लेबोरेटरी भी नहीं है जहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके. सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, QGIS बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड. एक बहुत ही अच्छा नाम है QGIS का.
लेकिन वो QGIS को इंस्टॉल करके एक कंप्यूटर लैब भी नहीं है अपने पास, मान लीजिए कांस्टेंट है अपने पास कि अपने को डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब नहीं दे सकते, तो मैंने क्या कहा कि आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो भी आपका काम बन जाएगा। Okay. वो कैसे? मैंने कहा कि गूगल अर्थ इंजन, आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अर्थ इंजन में बहुत अच्छे जियोस्पेशियल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, वेदर वाटर रिसोर्स, अर्बन ग्रोथ, कुछ भी, सो मेनी स्टडीज कैन बी पॉसिबल टू डू ओवर देयर। तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मैं बच्चों को इसलिए कह रहा हूँ कि मस्ट एक्सप्लोर करें, आपका बीटेक प्रोजेक्ट के लिए जरूर एक्सप्लोर करें, और आप इसमें कुछ नया जरूर सीखेंगे, एंड दैट विल बी काइंड ऑफ वैल्यू एडेड टू योर रिज्यूमे आल्सो, आई विल से। So I think now we have to wrap up the session, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. With us. Thank you, Vikas, for calling me and giving me an opportunity to interact with you people, because it was, I mean, very long time since I visited RPS. I think I have visited sometime in 2017 or so. Last time I visited RPS in 2017, I think. Okay. So in the month of March, I was in Mahendragarh only, not Mahendragarh, Narnaul. March, Okay. I was in Narnaul for some family function. I was there on Narnaul. Right. So anyway, if I get some opportunity to visit that place again, then I will definitely visit your organization also. Most welcome anytime. Because this time I visited in March, but because of the some family reason and lack of time, actually, it was a completely busy schedule, tightly packed schedule. So I could not make any efforts also to visit either 𝗵𝘁𝐶M or RPS. But anyway, whenever I will come, I will let you know this time. Sure, sir. Sure. Most welcome. So thank you, sir. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you very much.